हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ रीस एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की डिफिनीशंस को पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं, और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े। आज हम कुछ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे और देखेंगे कैसे उनके प्रूफ लिखे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनके सम का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो सम होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट जो होता है वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर देते हैं जिसपे डिनोमिनेटर जीरो होता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि लेट आई एम जस्ट टेकिंग हियर, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous function, two continuous functions. Okay, so if you are talking about fx plus gx, this is your sum of two functions. इसको समटाइम ऐसे भी लिखा जाता है फॉर द नोटेशन g of x. Okay, this is equal to, so this sum is again a continuous function. Continuous, and similarly if we talk about the product f into g of x is just equal to fx into जी, है ना। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उनका प्रोडक्ट करके एक अनदर फंक्शन बनाते हैं तो वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आता है। इफ यू आर टॉक अबाउट द क्वेश्चन, दिस इज एफ एक्स अपॉन जी, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस ऑन दोज पॉइंट विच आर नॉट मेकिंग जी एक्स जीरो, है ना, जिसपे जी एक्स हमारे पास जीरो नहीं होता। प्रोवाइडेड provided that the gx should not equals to 0. ओके, वो सारे पॉइंट्स हमें नहीं लेने, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो वी हैव दिस रिजल्ट्स एज अ रिजल्ट। आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन fx, that is the x square into sin of x, we know that sin x is a continuous function and x square also a continuous function. So their product will also be a continuous function. So this is the continuous function in its domain where they are defined, because this sin x is depend on the whole real number and x square is also on the whole real number, then their product will be a continuous function. Okay, so this इसी तरीके से if there are some, you adding some two functions which are continuous in their domain, and x square plus sin of x is on just writing anything, and if you are just writing x square and plus e to power x, so this is also the two continuous functions. These both are the continuous functions. तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जिस पॉइंट पे, और इफ दे आर आस्किंग कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करें कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, देन यू गो फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड लिमिट इज एग्जिस्ट, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है उसको देखना है, बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यही तो हमने पढ़ा था, यही तो डेफिनेशन थी। ओके, so this is all about your sum, product and question. Okay, next we are going to prove a theorem. What is the theorem is saying? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, थ्योरम क्या कहती है कि लेट लिमिट x टेंडिंग टू a of gx, it means it just equal to अल्फा। मतलब जो gx की लिमिट है when x टेंडिंग टू a, that is your अल्फा, and let f be a function, let f be a function
be a function continuous at alpha. हमने देखा कि हमने क्या करा कि हमारे पास जो gx फंक्शन था उसकी लिमिट x टेंडिंग टू a अल्फा है और f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस एट अल्फा, अल्फा पे कॉन्टिन्यूअस है. then what, this is limit x tending to a f of gx, f of gx, and this is bracket is closed because it's right like this. gx is just equal to, is taking this f is outside, मतलब ये लिमिट को आप कॉम्पोजिशन के अंदर भेज सकते हैं. ठीक है, अगर f is a continuous function then this result is true only for the continuous function. तो अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा होता क्यों है. दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a of g. Yes, similarly you can say this is equals to f of alpha, है ना. So if the function is continuous at alpha, then limit when x tending to a of f of gx is just equal to f times limit x tending to a of gx, and that is equals to f alpha. Got it? So I'm going to prove it. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के अंदर कंपोजिशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना. तो ऐसा इट हैपेंस ओनली फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट नीड नॉट टू बी नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं कह सकते, होगा नहीं होगा, इट मे बी पॉसिबल, बट फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिस कंडीशन डेफिनेटली विल होल्ड. ये हमेशा हमेशा होल्ड करेगा कि हम कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हम लिमिट को भेज सकते हैं. ओके, तो लेट अस सी हाउ. तो प्रूफ लिखना है हम लोगों को. राइट अ प्रूफ. तो वी नो दैट कि f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट अल्फा, इट मींस दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन, there exists a lambda such that that is f x minus f alpha is less than epsilon whenever this x minus alpha is less than delta. So because we are used here g of x as x tending to alpha, x tending to a, तो हम करेंगे क्या कि हम जो है अल्फा को एज अ y जो हमारे पास कोडोमेन होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो just write here, since f is continuous, if f is continuous at alpha, okay, so we have what, for every epsilon we have, this is x, if just writing fy minus f alpha is less than epsilon when y minus alpha is less than delta. ये तो डेफिनेशन हमारे पास होल्ड करनी ही थी कंडीशन, तो कि ये डेफिनेशन है किसकी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की किसी पॉइंट पे. तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दैट इट मींस दैट दिस एफ वाई शुड बी बिलोंग्स टू, दिस इज योर एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ए प्लस एप्सिलॉन. ओके, when this y should be belongs to alpha minus epsilon and alpha plus delta, alpha minus delta and alpha plus delta. Got it? With this we have. तो further हमको एक चीज पता है, because just say here we know that further since this limit x tending to a, of gx, okay, is alpha. हमें पता है कि इसका लिमिट अल्फा है. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए भी हमें पता है, वी हैव द कंडीशन, है ना. लिमिट के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना, उसके लिए भी हो जाएगा. दिस इंप्लाई mod of gx minus alpha is less than epsilon
इट्स टेकिंग एप्सिलॉन डैश बिकॉज एप्सिलॉन यूज कर चुके हैं, तो हम इसके लिए एप्सिलॉन डैश मान लेते हैं, ठीक है। व्हेन दिस मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, तो हमारे पास सिंस लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू अल्फा a of gx is equals to alpha, so we have this gx minus alpha is less than epsilon dash, and when this x minus a is less than delta, ये तो हमें करना ही था, है ना। ये तो पता है क्योंकि लिमिट उसकी है, तो लिमिट है इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन डैश वी हैव एन डेल्टा, है ना, दैट दिस कंडीशन शुड बी ओके। नाउ लेट अस सी, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि द लिमिट ऑफ f, it will be changes to limit of x tending to a, f of gx is just equal to f times limit x tending to a of gx, ये इस तरीके से हमें देखना था। तो लेट अस सी, so now if we replace delta by the greater of the number delta dash and epsilon dash, okay। So if we replace this delta by the greater of the numbers delta dash ओके। सो एक चीज यहाँ पर जो समझनी है, ओके, सीइंग दिस इज डेल्टा डैश, या मिस प्रिंटिंग है आपकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा डैश है और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास y बिलोंगिंग टू दिस y माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा, और यहाँ पर क्या है, दिस दिस वन वर्ड जी एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा डैश एप्सिलॉन डैश व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा डैश। तो आपको करना क्या है कि इसमें से और इसमें से एप्सिलॉन डैश, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन डैश के लिए एक डेल्टा डैश एग्जिस्ट करेगा, तो वो डेल्टा डैश एप्सिलॉन डैश से बड़ा है या छोटा, इस पे निर्भर करेगा। तो अगर हमने कहा कि एप्सिलॉन डैश जो है हमारे पास बड़ा है डेल्टा डैश से, तो वी कैन चूज एज एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन डैश है उसको डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उसको हम मान लेंगे। तो नाउ वी रिप्लेस दिस डेल्टा बाय द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स अल्फा डेल्टा डैश एंड एप्सिलॉन, तो वी कैन कंबाइन अबव रिजल्ट। तो अगर हम ऊपर को रिजल्ट को कंबाइन कर लें तो वी कैन सी हियर क्लियरली, we can combine the above results into, देन ये हो जाएगा, हमने अल्फा चूज करा, उन दोनों में से कोई भी जो ग्रेटर वैल्यू होगी उससे हमने चूज करा, तो ये हमारे पास स्मूथली वी कैन से f of y into f alpha is less than epsilon, okay। when mod of x minus a is less than डेल्टा, ओके, एंड दिस इज मॉड। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिएगा कि हमने क्योंकि चूज करा है कि दिस जो बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। तो यू कैन से दिस इज एफ वाई माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। so if you just replace it, this is f of g alpha minus f alpha is less than epsilon when mod of x minus a is less than, क्लियर। तो हम एक चीज समझ रहे हैं कि अगर हम यूजिंग, हमें लिमिट की डिफिनेशन के बारे में पता है, तो वी कैन से, क्योंकि ये कंडीशन लिमिट की ही तो होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है
ये जो लिमिट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स उसकी क्या है एफ अल्फा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ limit we can write like this is a limit x tending to a, okay, because x tending to a of f of dx, f of dx is equals to f of limit of x tending to a of dx, clear? So this is the प्रूफ कि हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कंपोजिशन के अंदर लिमिट हम इंक्लूड कर सकते हैं। और कैसे हुआ, सिंपली वी हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था तो ये कंडीशन हमारे पास थी, और उसके बाद हमने जो इन इन दोनों में था एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन जो सबसे ग्रेटर था उसको हमने यूज करा, तो हमारे पास कंडीशन मिल गई दिस इज एफ ऑफ जी एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर when x minus a is less than delta, because x is equilibrium so we are tending x tending to a of f of gx, और यहाँ पर हम f को बाहर निकाल सकते हैं इजीली because this is proved, okay। so f of limit x tending to a of gx got it। तो ये हमें प्रूव करना था, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हम देख सकते हैं इसी रिजल्ट का थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से we can say here, हम लिख देते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ तो अगर हम देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द अबव थ्योरम कि कैसे हम इसे इस्तेमाल करके दूसरा रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो लेट अस राइट एप्लीकेशन ऑफ द अबव थ्योरम of the above theorem. What is saying? As an applicant, तो हम क्वेश्चन के ऊपर जरा यूज करते हैं। लेट अस सी कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a of fx upon gx just equal to what? L1 upon L2, clear? Where this limit x tending to a of fx is just equal to L1, and this is your limit x tending to a of gx is just equal to L2 is not equal to 0. Okay, so if you want to see कि कैसे हम इसे प्रूव करेंगे तो सिंपली लेट अस सी, ये हमें पता है since we know that the limit of x tending to a of gx just equal to L2 and it should not equal to 0, non-zero होगा, obviously non-zero होना चाहिए, and we know that कि 1 upon y is continuous because composition की हम बात करते हैं, है ना। continuous होता है when this y is not equal to 0 at y is equal to L2, it follows that this limit when x tending to a of 1 upon gx is just equals to 1 upon L, क्लियर। तो वी नो दैट कि हम ऐसे लिख, ये जो 1 अपॉन gx की लिमिट है 1 अपॉन L2 आ गई, और नाउ वी कैन से नाउ दिस लिमिट x टेंडिंग टू a of fx upon gx is just equal to what? This is a limit x tending to a of fx
into limit, this will be limit x tending to a 1 upon here. Got it? So this implies what? इसका तो 1 upon L2 हो गया, L1 हो गया, तो हो जाएगा L1 upon L2, where you can say this L2 is not equal to. Got it? So this is the application of the above theorem, जिससे हमने ये देखा कि constant की जो limit है that will be distribute over L1 and L2. क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे. व्हाट मीनिंग ऑफ इट, लेट अस सी, अंडरस्टैंड करते हैं इसको. ओके, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हम कह सकते हैं. राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, continuity या लिमिट भी कहते हैं, left hand and right hand continuity. Okay, so if we are just saying if fx है ना is defined only on the right side of a point, defined only for x is greater or equal to a. ठीक है, so we call fx is continuous on the right at x is equals to a. If this limit, you can say limit x tending to a plus right hand limit of fx, it's equal to value of the function at that. अगर ऐसा होता है कि राइट हैंड लिमिट हम निकालें उस पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन मोर देन ए के लिए या इक्वल टू ए के लिए डिफाइंड है, उससे उससे छोटे के लिए डिफाइंड नहीं. तो उस केस में अगर हमें इन पॉइंट ए पे लिमिट की बात करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एफ एक्स की, और दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू रही होगी, वो अगर इक्वल होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस पॉइंट, है ना. सिमिलरली वी कैन से this fx is continuous on the left at x is equals to a if this limit x tending to a minus of fx is just equal to f of a. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमारे पास निकल रही फंक्शन जो है लेफ्ट वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू a के लिए डिफाइंड है, तो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट. और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर होता है तो उसे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस भी बोला जाता है. So this left hand limit x tending to a minus f equals to f a. Okay, so this is our left continuity, या और ऊपर हमारा राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी कहलाती है. जैसे ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल, तो वी कैन से कि हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना. So if you are going to write the continuity in an open interval, because it's the continuity in an open interval, then we can say that this continuity is equal to value of the function at that point. So if we are going to write the continuity in an open interval, because it's the continuity in an open interval, then we can say that this continuity in an open interval is equal to value of the function at that point. So if we are going to write the continuity in an open interval, then we can say that this continuity in an open interval is equal to value of the function at that point.
an open interval. So if a function fx, a function, this fx is said to be है ना, a function fx is said to be continuous over an open interval, continuous over an open interval a comma b, and if it continuous, at every point of the interval, ओके। सो एक ओपन इंटरवल हमारे पास तभी कंटिन्यूअस होता है जब उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसे कहेंगे कॉन्टिन्यूटी इज एन ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। इसमें ओपन इंटरवल का मतलब तो है ही है, साथ में इंड पॉइंट पे लेफ्ट या राइट की कंटिन्यूटी की बात करना है, तभी हम कह पाते हैं क्लोज इंटरवल के अंदर। तो लेट अस राइट हियर continuity in a closed interval, in a closed interval. So a function fx is said to be continuous in a closed interval a comma b if it satisfies the following result. The following three conditions. What are the condition? Number one, in the end points, खासकर a comma b. तो इस पॉइंट पे हमारे पास this limit x tending to a plus b, है ना, it should be equal to f. That means the function should be not left, it's right hand derivative. Right hand continuity. नेक्स्ट है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, लिमिट दिस इज b माइनस एट एफ एक्स, इट शुड बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जस्ट इक्वल टू b। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास किस पॉइंट पे होना चाहिए, b पॉइंट पे, सेकेंड इन पॉइंट, ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज व्हाट, दिस इज लिमिट x tending to a and it should be equal to value of the तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज दैट ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, तो अगर हम कोई पॉइंट ले लें x नॉट,
tending to x naught, and the x naught is point between close open interval a comma b. तो इसका मतलब उस हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर ईच x comma y in this interval, है ना, each x naught such that x naught is less than b and greater than a. Clear? So this is the your continuity of a function in a closed interval, means that function should be continuous throughout the open interval a comma b. पहली बार जो थर्ड इसमें हमारे कंडीशन लिखी हुई है, और फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि इस ए पॉइंट पे जो कि हमारा लेफ्ट इन पॉइंट है, उस पे फंक्शन, क्योंकि उसके लेफ्ट में तो डिफाइंड नहीं है, उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और जब ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफाइंड हो, इन दैट केस जो उस पॉइंट पे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट है तो राइट हैंड वाला जो पॉइंट है वो एफ ए की इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से जब राइट इन पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पर राइट के बाद, राइट इन पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो बात नहीं, तो उससे पहले की बात करेंगे, इसका मतलब बी पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, लिमिट बी माइनस ऑफ एफ एस इज जस्ट इक्वल टू एफ पी, लेफ्ट हैंड क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके हम बात करेंगे लेटर ऑन। तो आप लोग जो है कॉन्टिन्यूटी को बारीकी से समझिए और उसके बाद काम करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो सम की हमने बात करा और हमने एक रिजल्ट प्रूव करा कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के अंदर हम भेज सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, is happen only for the continuous। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आ रही हैं, और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए, आप सपोर्ट करिए बढ़ने में, ताकि स्टूडेंट तक हम पहुंच पाए, और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स कंटेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़िए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बाकी और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।